Good afternoon to everyone. Am I audible? Please type yes in the chat box if I am audible to you. So welcome to this session of weekly current affairs of Indian economy. In this week, we are going to see several current affairs which are important from the perspective of prelims as well as mains examination of UPSC. So let's see what are we going to see. First, we will be seeing the change in policy rates by the Reserve Bank of India, after which there was a news that there were suspected beneficiaries under the National Food Security Act of 2013. We will be seeing what is National Food Security Act through these headlines. After that, there was a report released by the International Monetary Fund called the External Sector Report 2022, in which it recommended several measures for the Indian economy with respect to external sector that you can quote in your mains answer writing. And in the end, we will be seeing the Financial Inclusion Index, which is released by which organization? Can you type in the chat box? Can you type in the chat box, please? Which organization released the Financial Inclusion Index? We have to be attentive. Which organization released the Financial Inclusion Index? So the Financial Inclusion Index is released by RBI. All right. Reserve Bank of India released the Financial Inclusion Index. So we are going to see two news which are related to the Reserve Bank of India. हम भारतीय रिजर्व बैंक से related दो खबरें देखने वाले हैं. All right. So let's begin. Yeah. So in this month of August, Reserve Bank of India has again increased the policy repo rate by 50 basis point. 50 basis point. What is the basis point? What is basis point, students? Basis point simply mean 1/100th of a percentage. 1/100th of a percentage. Alright, so 1 basis point essentially means that we are talking about 0.01%. 1 basis point essentially means that we are talking about what? 0.01%. So if the Reserve Bank of India has released again hiked the repo rate by 50 basis point, it means that the repo rate hike is at 0.5%. So this has been the third such repo rate hike in this year. Firstly, it was done in the month of May, where the repo rate was hiked by 40 basis point, after which 50 basis point hike was done in the month of July and then in August. So we have a total of 140 basis point hike this year. All right, and the Reserve Bank of India governor, he said that the inflation levels, they remain uncomfortably high in the Indian economy. What is the target range? What is the target range of inflation that the RBI has to target? What is the rate? What is the range of inflation between which RBI targets that the inflation should be between this range only? Can you type in the chat box? Please participate in the class. What is the range? Yes, 2 to 6%. Correct. 2 to 6% is the range between which RBI has to keep the repo rate. Under the Reserve Bank of India Act of 1934, RBI Act of 1934, Reserve Bank of India has been entrusted with the responsibility of conducting monetary policy in India, with a view to maintain comfortable inflation levels as well as good growth in the economy. Okay, RBI Act in 1934, it was amended in which year? 2016, after which inflation targeting was adopted. It was adopted after 2016, and the range between which the inflation has to be maintained is 2 to 6%.
All right. So since the CPI, that is the consumer price index, it remains above 6%, around 7%, it is hovering around 7%. That is why Reserve Bank of India again increased the repo rate. The governor of Reserve Bank of India also said that the bank credit growth is also good, because of which repo rate hike is necessary. Otherwise, monetary base of the economy will increase and it will lead to further inflation. And along with this, Reserve Bank of India has retained the growth outlook. It has retained the growth outlook of present financial year at 7.2%. So this was all news related to Reserve Bank of India, why it hiked the repo rate. Now let's see more into it. Yeah, so it has exercised its power under liquidity adjustment facility. Can anyone tell me what is liquidity adjustment facility? Can anyone tell me what is liquidity adjustment facility? Liquidity adjustment facility or LAF comprises several instruments that are used to maintain the monetary expansion or contraction in the economy. So the various instruments which are used are repo rate, reverse repo rate, standing deposit facility, and marginal standing facility. All right, these are example of some of the instruments or tools which are used to control the monetary supply in the economy. Here we are talking about changes in two basic policy rates. The first is the repo rate. It has been increased to what percentage? If you are reading newspaper, you can comfortably answer this question. Repo rate has been increased to what percentage? Try to answer in the chat box, please. Repo rate has been increased to what percentage? Repo rate has been increased to 5.4%. It has been increased to what? 5.4%. Standing deposit facility, the rate of standing deposit facility has been increased to 5.15%. 5.15%. And MSF rate, marginal standing facility rate, it has been increased to what? 5.65%. All right, so these are the basic changes. Earlier it was at 4.9%, and after which it has been increased to 5.4%. So this is liquidity adjustment facility through which RBI controls the money supply in the economy. What are the other ways it can control? The other ways include open market operations. Have you heard of it? Open market operations and forex swaps, yani ki foreign exchange swap agreements. All right. So yeah, let's go back to the news. This was about liquidity adjustment facility. And can any of you tell me what is the difference between standing deposit facility and reverse repo rate? Reverse repo rate and standing deposit facility में क्या difference है? Basically, reverse repo rate is used when RBI is borrowing from the banks. All right. And under reverse repo rate, RBI has to give collateral to the banks while borrowing. While under standing deposit facility, these are not collateralized. Not collateralized यानी कि RBI को कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है when it is taking up loan from under standing deposit facility. First difference is this. Second difference is that the banks can count SDF as SLR. यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के अंडर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को काउंट किया जा सकता है
while रिवर्स रेपो रेट में ये दोनों ही फैसिलिटी इंक्लूडेड नहीं होती हैं, दोनों ही फैसिलिटी इंक्लूडेड नहीं होती हैं व्हेन वी आर कंसीडरिंग अ रिवर्स रेपो रेट. सो रिवर्स रेपो रेट इन सब का मतलब क्या है? लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट. लेट्स सी. सो यस, बहुत ही इजी है समझना. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेपो. रेपो बेसिकली मीन्स रीपर्चेज ऑपरेशंस. ऑलराइट, repurchase agreement, repurchase operations. What essentially happens is that in economy there is RBI, all right, and then there are banks. It's a very simplified explanation of what these repo operation are, all right. So RBI है यहाँ पे, banks हैं यहाँ पे. Now due to some circumstances बैंक्स को जरूरत पड़ी कि उन्हें बोरो करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी लिक्विडिटी इतनी नहीं है, उनके पास अवेलेबल मनी इतना नहीं है. सो व्हेन दे गो टू आरबीआई, आरबीआई के पास क्यों जाएंगे? बिकॉज आरबीआई इज बैंकर ऑफ बैंक्स, बैंकर ऑफ बैंक्स. सो बैंक्स गए आरबीआई के पास, बैंक्स गो टू आरबीआई एंड दे आस्क फॉर लिक्विडिटी और मनी, बोरोइंग. ऑलराइट, तो बैंक्स गए आरबीआई के पास, उन्होंने कहा कि हमें लिक्विडिटी चाहिए. आरबीआई प्रोवाइडेड लिक्विडिटी टू द बैंक्स. इन रिटर्न बैंक्स प्रोवाइडेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन एक्सचेंज अलोंग विद एन रीपर्चेज एग्रीमेंट कि हम इस तारीख को वापस ये परचेज करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ठीक है. सो आरबीआई ने क्या दिया बैंक को? लिक्विडिटी. आरबीआई गेव लिक्विडिटी टू द बैंक्स while banks gave government securities to the RBI along with repurchase agreement. All right, repurchase agreement. Generally ये repo operation overnight होते हैं, यानी कि we will be considering overnight repo only for this example. यानी कि आज एक दिन, अगला दिन, दूसरा कल होगा जब दोनों ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएंगे. All right. लिक्विडिटी का करेक्ट मीनिंग ये होता है कि मनी प्रोवाइड करना जो लिक्विड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म एज एन कैश हो या फिर डिपॉजिट ऐसे हो जो यूज कर सके. फॉर एग्जांपल अगर एसेट होगा, कोई लैंड या फिर कोई बिल्डिंग, उसको जल्दी हम लिक्विडेट नहीं कर सकते. वी कांट लिक्विडेट लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, बट वी कैन लिक्विडेट और वी कैन हैव मनी इन आवर हैंड टू डू एनीथिंग विद इट. ऑलराइट, सो दैट मीन्स लिक्विडिटी. तो आरबीआई ने लिक्विडिटी प्रोवाइड करी बैंक को, बैंक ने दिया वापस गवर्नमेंट सिक्योरिटी along with repurchase agreement. Repurchase agreement ये आपका डे 1 का ऑपरेशन हो गया. This is day 1. All right, डे 1 ऑपरेशन ये हो गया. अब रेपो रेट है ओवरनाइट, यानी कि आज पहला दिन, कल को ये उल्टा होगा जब बैंक को वापस इंटरेस्ट रेट के साथ पैसा वापस करना पड़ेगा एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस दे देंगे. सो व्हाट एसेंशियली हैपेंड इज दैट ऑन डे 2 what happened कि बैंक्स ने क्या वापस की? जो मनी बोरो करा था, बोरोइंग प्लस इंटरेस्ट एट व्हाट? एट रेपो रेट वापस किया. एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या वापस करा? व्हाट डिड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिटर्न टू द बैंक्स? क्या लिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक से? प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस कर दी. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर रिटर्न टू द बैंक्स. सो एसेंशियली इट इज अ काइंड ऑफ बोरोइंग दैट बैंक्स आर अंडरटेकिंग. तो रिवर्स रेपो, अगर रेपो रेट, वी आर इंक्रीजिंग द रेपो रेट, इफ वी आर इंक्रीजिंग द रेपो रेट, इट एसेंशियली मीन्स दैट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर दीज बैंक्स, they are going to increase. And if cost of borrowing is increasing, it means that they are going to borrow less because they have to pay more interest on their borrowing. So what is happening is that the borrowing of banks is decreasing, because of which money supply will decrease in the economy. And if money supply in the economy is decreasing,
it will help in controlling the inflation, because higher money supply is correlated with higher inflation, because people have more money in their hand and hence they can spend it more on products and other needs. All right, if money supply is less, it essentially means that the inflation will go down. So आपको ये चेन ऑफ इवेंट समझ में आए? डू यू अंडरस्टैंड द चेन ऑफ इवेंट्स? द चेन ऑफ इवेंट्स गोज लाइक दिस. रेपो रेट इंक्रीज हुआ, मनी सप्लाई विल डिक्रीज एंड व्हाट विल हैपन? इन्फ्लेशन विल गो डाउन. सो यही तो ऑब्जेक्टिव है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकें. सो दिस इज व्हाट रेपो रेट और रीपर्चेज ऑपरेशंस आर. इसी का रिवर्स जो होता है वो होता है रिवर्स रेपो रेट, व्हेन द आरबीआई इज बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द बैंक्स. ऑलराइट, सो वो होता है रिवर्स रेपो रेट. आई थिंक उसे समझाने की जरूरत नहीं, बिकॉज इसी का उल्टा है वो. ऑलराइट, सो दिस इज द होल प्रोसेस. नाउ लेट्स गो बैक टू द न्यूज. सो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के रेट में भी चेंज आया है, and marginal standing facility 5.65% and standing deposit facility rate is at 5.15%. all right, so the repo rates, they were very high earlier, and during the covid period they were reduced during the covid period. So it is being said that the repo rates are now at the pre-pandemic levels, in the sense that before March 2020, they were at 5.15%. And during April 2018, the year of 2018, they were even higher at 6%. All right. So ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ एक्सेप्शनल चीज हो रही है. It is just that we are increasing the repo rate to the pre-pandemic levels. And pandemic के during हमने repo rates क्यों decrease करे थे? Because we wanted that there should be liquidity in the market so that the industry could grow. अगर pandemic के टाइम पे भी loans लेना expensive होगा industries के लिए, तो वो लेंगे ही नहीं, जिसकी वजह से economic activity will go into a slowdown. So that is what is happening. And this chart represents the CPI based inflation over time. Currently it is hovering around 7%. all right, and rupee exchange rate, we are already reading about it, how rupee is weakening vis-a-vis dollar, and it has crossed even the rupees 80 per dollar limit, but now it is back to 79.25. all right, so this is what we need to learn in this news. Let's move forward. So why was this decision taken? This is the official explanation by the Reserve Bank of India. That is why they have increased the repo rate. As per them, there is a global uncertainty going on. Global uncertainty going on in the form of, there is a Russia-Ukraine war that is already happening. Russia-Ukraine crisis, we are aware of that. all right, and then there is a problem of crude oil rates, and there is problem of US Federal Reserve rate hikes. Similarly, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे यूएसए में वहां का फेडरल बैंक है, वो अपने रेट्स बढ़ा रहा है. सो व्हाट इज हैपनिंग, दैट कैपिटल आउटफ्लोज आर हैपनिंग फ्रॉम इंडिया, बिकॉज ऑफ विच रुपी इज वीकनिंग. अब दो चीजें हो रही हैं कि कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है और रुपी भी कमजोर हो रहा है. तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए व्हाट हैपेंस इज दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया it has to maintain a comfortable exchange rate also. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे फंक्शन है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंडक्ट करेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा, ग्रोथ लाएगा, और एक्सटर्नल सेक्टर को भी इसी ने देखना है. सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट जब रुपी की वैल्यू गिरती है तो आरबीआई इंटरसेप्ट करता है. ओके, इंटरसेप्ट इन द फॉर्म इट यूजेस इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स to control the weakening of Indian rupee, and that is why emerging market economies, they are experiencing capital outflows and reserve losses because the value of their reserves are decreasing. all right, so ये है जो इन्होंने explanation दी है अपने official notice में, why they have taken this decision. all right,
डोमेस्टिक में क्या है, इन्होंने कहा है कि देयर इज कंफर्टेबल लेवल्स ऑफ सोइंग ड्यूरिंग दिस सीजन बिकॉज साउथ वेस्ट मॉनसून रेनफॉल ये अच्छी थी, लॉन्ग पीरियड ऑफ एवरेज के अनुसार इट वॉज हायर देन 6%. सो एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छी हेल्थ में चल रहा है, सो हम रेपो रेट इंक्रीज कर सकते हैं. देखो ये एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है, व्हाई डू यू थिंक दे आर गिविंग दिस एक्सप्लेनेशन? बिकॉज क्या होता है कि इफ यू आर इंक्रीजिंग रेपो रेट्स इन द इकोनॉमी, it essentially means that the cost of borrowing for different industries they are going to increase, because of which there is a danger of slowdown. ठीक है, तो दो चीजें हैं कि प्री पैंडेमिक लेवल्स था, पैंडेमिक जब आई, जस्ट मिनट, सो जब पैंडेमिक आया उसने ऑलरेडी एक स्लो डाउन इंड्यूस किया बिकॉज डिमांड went down, people were more into savings. All right. अब अगर इसी के साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ा देता है, अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है इसी के साथ साथ, so what would happen is that this slowdown may persist. So that is why Reserve Bank of India is giving different explanations कि एग्रीकल्चर की हेल्थ अच्छी है, क्रेडिट ऑफटेक जो बैंक से हो रहा है वो भी अच्छी ग्रोथ में है, एंड हेंस वी कैन इंक्रीज द रेपो रेट्स विदाउट फियर ऑफ स्लो डाउन. ओके, सो दैट इज व्हाई दिस डिसीजन वाज टेकन. ऑलराइट, एंड अदर आउटलुक वगैरह में कि आउटलुक क्या कह रहने वाला है, तो आपको बस ये जानने की जरूरत है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिटेन्ड द ग्रोथ ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट 7.2%. 7.2% पे रिटेन करी है ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी. एंड जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो रही है, फॉरेक्स रिजर्व के लॉसेस हो रहे हैं, इन सबको देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेट हाइक. नाउ व्हाट आर द इंपैक्ट्स, व्हाट डू यू थिंक आर द इंपैक्ट्स ऑफ दिस रेपो रेट हाइक? कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स? What do you think are the impact of this repo rate hike? Borrowers को फायदा होगा या नुकसान होगा? Will borrowers benefit out of this repo rate hike or not? Type in the chat box, please. बोरोवर्स का फायदा होगा या नुकसान होगा? विल द बोरोवर्स बेनिफिट फ्रॉम द रेपो रेट हाइक और नॉट? So if the repo rate is increased, it essentially means that the amount of interest on loans, they will also increase, and hence the borrowers are at a loss because they have to pay more interest on their borrowings. All right. Now the other thing is, if the banks are increasing the interest rate on the loans, they also have to offer attractive interest rate on their savings account, because of which people may now prefer putting their money into the savings bank account. Now इस चीज से भी आप देख सकते हैं, savings bank account में if people are putting more money, it essentially means that the demand of the economy is going down because they are now saving money and not purchasing things through it. So demand will also go down. तो ये एक कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम बन जाता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना जरूरी है, बट वी ऑल्सो हैव टू मेंटेन ऑप्टिमम लेवल्स ऑफ ग्रोथ. एंड हेंस अगर ये दोनों ही चीजें हो जाएं कि इन्फ्लेशन हाई हो और ग्रोथ भी नहीं हो रही है, सो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? व्हाट वुड बी कॉल अ सिचुएशन वेयर इन्फ्लेशन लेवल्स आर हाई एंड देयर इज नो ग्रोथ प्रेजेंट इन द इकोनॉमी. What would we call this situation? Can anyone tell me? It is a very popular terminology जिसका डर हमें लग रहा है, जिसका डर हमें हो रहा है कि यह हो सकता है कि इन्फ्लेशन भी हाई रहे और ग्रोथ भी ना हो. वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, जिसे हम कहेंगे स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन. ऑलराइट, स्टैगफ्लेशन यानी कि स्टैग्नेंट growth, high inflation. All right, good.
Good, good. So let's now attempt some questions related to this Reserve Bank of India monetary policy. Let's see how many of you can answer this. If the Reserve Bank of India decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would not do? It would not do: cut and optimize the statutory liquidity ratio, increase the marginal standing facility rate, cut the bank rate and repo rate. Now try to answer this question. It is from 2020 prelims previous year question. Try to answer this question, please. एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है कि हमें मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है. वी वांट टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. वी वांट टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. सो मनी सप्लाई अगर इंक्रीज करनी है, वी वांट टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, व्हाट वुड वी डू? रेपो रेट कट करेंगे, ठीक है. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे? So Sakshi is saying 1 and 3 only. Rohit is saying 3C. Bittu the Hatti is saying D, and now has changed the answer to A. Shreyans is saying C. So yes, repo rate हम डिक्रीज करेंगे if we want to increase the money supply. तो थर्ड वाली स्टेटमेंट करेक्ट होगी या नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू? कितनी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. दे आर सेइंग व्हाट इट वुड नॉट डू. तो रेपो रेट तो इंक्रीज करेंगे, है ना, रेपो रेट तो डिक्रीज करेंगे. सो ये वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट इसके हिसाब से ये गलत हो जाएगी, है ना. इट वुड नॉट कट द बैंक रेट, बट नहीं, कट तो करना पड़ेगा, तो इसके हिसाब से ये गलत हो जाएगी. Now second, marginal standing facility rate. Again, marginal standing facility rate we have to decrease in order to increase the money supply. All right, and cut and optimize the statutory liquidity ratio. अगर statutory liquidity ratio decrease हो रहा है, तो it means that the money supply will increase because now bank have more money in their account to expend, to give out as loans. So let's see whose answer is correct now. The answer as per the official answer key is B. And now who has answered the correctly? Girish. All others have answered C, D, A, C. So only one student, Girish Mangal, has answered it correctly. यानी कि इसका आंसर है 2 only. अगर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बढ़ाएगा, so what would happen is that money supply will decrease, but we want an एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये चीज नहीं करेगा. ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी. इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू आंसर दिस. ये 2022 यानी कि इसी साल आया है. बताइए इसका आंसर क्या होगा? व्हाट वुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? D. Yes, on this everyone is answering the correct option. They are marking the correct option, that is Reserve Bank of India. As per which act? Reserve Bank of India Act, RBI Act of 1934. Furthermore, दो इंपॉर्टेंट सेक्शन जो इस एक्ट में है, सेक्शन 45ZA, इट इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन टारगेटिंग, एंड सेक्शन 45ZB, इट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. ये अभी जो डिसीजन आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो रेपो रेट इंक्रीज करने का, ये
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन है, ऑलराइट, इट कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, ऑलराइट, द गवर्नर हैज अ कास्टिंग वोट, गवर्नर इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। तो जो डिसीजन लिया है वो मॉनेटरी पॉलिसी ने कमिटी ने लिया है, जो कि सेक्शन 45ZB ऑफ द आरबीआई एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या ट्राई टू आंसर दिस प्लीज। With reference to the Indian economy, consider the following statements. If the inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy government securities. Is it true? If the inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy government securities. If Reserve Bank of India is buying government securities, it means that it is releasing money into the market. यानी कि money supply is increasing because of this operation. So, इसका ये स्टेटमेंट सही होगी? नो, बिकॉज इन्फ्लेशन तो इंक्रीज हो जाएगा ना अगर मनी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। सो नॉट। इफ द रूपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। ये होता है जब रूपी की वैल्यू गिरती है तो फॉरेक्स रिजर्व से निकालकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डॉलर्स मार्केट में निकालता है, ऑलराइट, ताकि जो रूपी की वैल्यू है वो स्ट्रेंथन हो पाए। सो दिस इज द करेक्ट, ऑलराइट। नाउ if interest rate in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. But हमें इसकी जरूरत ही नहीं, हम इसे उससे आंसर इसका करेक्ट फाइंड कर सकते हैं किसके थ्रू? एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू, ऑलराइट। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2 and 3. Some of you are already very fast. Sakshi B, Rohit Bhardwaj B, Kaveri B. Very good. Good, good, good. Now we have seen the changes in the recent policy rates by the Reserve Bank of India. Now let's move on to the next topic quickly, that is suspected beneficiaries. See, in order to ensure food security in India, we have an act, National Food Security Act. 2011 के अराउंड सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू फूड ग्रांट किया था, अंडर विच केस? अंडर द केस कॉल्ड PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू फूड मिला, राइट टू फूड मिला, बट अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 we truly moved towards right based allotment of food to other people. Rights based allotment, all right. So National Food Security Act 2013 में आया. Now what is food security? Food security essentially means that all people at all times have economic, social as well as physical accessibility to food. Accessibility कौन सी होनी चाहिए? Economic यानी कि वो अफोर्ड कर पाए, social यानी कि कोई उन्हें रोके ना खाना लेने से, एंड फिजिकल मींस एक्चुअल में फूड ग्रेन्स इतने उपलब्ध होने चाहिए, इतने फूड ग्रेन्स अवेलेबल होने चाहिए मार्केट में कि वो ले पाए. So food security essentially means that all people at all times have economic access and social access and physical access to safe, sufficient and nutritious food. This is what food security essentially means. Now let's see. न्यूज में क्या आया कि कुछ सस्पेक्टेड बेनिफिशियरीज हैं, दैट मींस दैट दे आर व्हेन दे आर नॉट एलिजिबल अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, still they are under the list through which they are benefiting from the free rations or subsidized food. All right, so ये न्यूज थी. Now we have to see what is National Food Security Act. National Food Security Act is a very basic thing that you need to understand because food management हमारे GS3 के टॉपिक में अवेलेबल है. GS3 में food management आता है, food management, under which it is very basic that we should have knowledge of National Food Security Act. So इसके कुछ बहुत ही important pointers हैं. सबसे पहला कि it seeks to provide subsidized food grains to 66% population of our country. Its coverage is extended to 75% in rural areas, 75% in rural areas and 50% in urban areas. ठीक है, तो ये इसका सबसे पहला पॉइंटर. नाउ सेकेंड इज दैट
it seeks to empower women. Seeks to empower women in what sense? See, जो राशन कार्ड होगा ना, जो राशन कार्ड होगा वो इश्यू होगा जो एल्डेस्ट मेंबर होगी हाउस होल्ड की, वीमेन, ऑलराइट. सो उसके नाम पे इश्यू होगा. तो एक इसमें वुमेन एम्पावरमेंट वाला कंपोनेंट आ जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ₹6,000 टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन फॉर 6 months. ऑलराइट, 6,000 उन्हें देने का भी प्रोविजन है ताकि उनके वेज लॉस को कॉम्पेंसेट किया जा सके एंड सो दैट दे कैन अवेल सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड फ्रॉम द मार्केट. सो एक कंपोनेंट वुमेन एम्पावरमेंट का. फर्दर इस पे सेंटर और स्टेट्स दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे. सेंटर क्या करेगा? सब्सिडी प्रोवाइड करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा उन फूड ग्रेन्स को स्टेट तक. एंड स्टेट्स क्या करेगा? दे विल आइडेंटिफाई द एलिजिबल बेनिफिशियरीज अंडर दिस एक्ट. तो तीसरी ये चीज हो गई. ऑलराइट, फोर्थ चीज है कि इनके एलिजिबल जो बेनिफिशियरीज हैं दे हैव बीन डीलिंक्ड फ्रॉम द बिलो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट्स. ऑलराइट, दिस इज बीइंग प्रोवाइडेड एज अ राइट टू 66% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. इसका बीपीएल से अब कोई रिश्ता नहीं रह गया है. तो ये आपका एक और पॉइंट हो गया. ऑलराइट, नाउ फर्दर देयर इज availability of grievance redressal mechanism under this National Food Security Act. So एक ही आपका गुड गवर्नेंस का भी कंपोनेंट आ गया कि अगर किसी को खाना नहीं मिल पा रहा है या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, दे कैन रजिस्टर देयर ग्रीवांसेस विद द रिस्पेक्टिव स्टेट पोर्टल्स. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड. नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट. ऑलराइट, this question came in 2018. Please try to attempt this question. With reference to the provisions made under the National Food Security Act 2013, consider the following statements. The families coming under the category of below poverty line only are eligible to receive subsidized grains. The second point is that the eldest woman of a household of age 18 or above shall be the head of the household for the purpose of issuance of a ration card. And third is pregnant women and lactating mothers are entitled to take home ration of 1600 calories per day during pregnancy and for 6 months thereafter. Okay, now try to attempt this question please. मोनू कुमार is writing, sir जब समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझ में नहीं आ रहा मोनू कुमार आपको? What are you not able to understand? Please type your query in the chat box. We have a very democratic way of asking question. Okay, answers are coming. Yamandeep is saying B. All right. What about others? Shay is saying B. Rohit is saying B. Bittu B. Sakshi D. So Sakshi is saying D. What about others? Rohit B. So yes, see, families coming under the category of below poverty line, we just discussed this, that below poverty line से अब इसका कोई नाता नहीं रहा. All right. तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो गई. ये वाला ऑप्शन हट गया. अब कंफ्यूजन है सेकंड यानी कि बी और डी में. ठीक है, तो बी का क्या है? एल्डेस्ट वुमेन इन हाउस होल्ड ऑफ एज 18 ईयर्स और शैल बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग राशन कार्ड. ये चीज हमें पता है. थर्ड वाली चीज इज फैक्चुअल, जो हमें नहीं पता है कि 1600 है या नहीं. सो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते. बट अगर हमें ये स्टेटमेंट पता है कि ये 18 ईयर्स ऑफ अबव का हेड ऑफ द हाउस होल्ड होगा फॉर द पर्पज ऑफ इशुएंस ऑफ राशन कार्ड, तो हम कह सकते हैं, वी कैन सेफली से दैट बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, वैसे थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज not 1600 but 600 calories, along with it ₹6,000 also provided under this act. ठीक है, and hence the correct answer to this question is B. Now this is the seize the mains question which you can submit on the website www.rajIASacademy.com. Take a screenshot of this question or write it down and try to attempt this question, submit your answer, and it will be discussed on a Seize to Main series on YouTube only. Recently, the Union government has found that 70 lakh beneficiaries under the National Food Security Act are suspect. What is the significance of NFSA for India? Discuss the challenges in its implementation. Discuss the challenges in its implementation. ठीक है, take a screenshot of this question or write it down. By the way, any of you
know what is the sustainable development goal related to hunger, zero hunger, that you can also mention under this answer. SDG related to hunger, zero hunger वाला कौन सा है? Does anyone of you know? Good. Shreya is saying SDG 2 is related to what? Zero hunger. So try to use this knowledge also when writing mains answers. All right. Now let's move on to the next headlines. We are running out of time, so we have to discuss it quickly. External Sector Report 2022 released by International Monetary Fund. इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया को रिकमेंड करे हैं दैट दे कैन टेक टू इंप्रूव द स्टेट ऑफ आवर इकोनॉमी. दे आर सेइंग, आई एम ब्रॉडली टेलिंग यू दैट यू कैन मेंशन दीज पॉइंट्स इन द मेंस आंसर राइटिंग. सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट India should withdraw the fiscal and monetary policy stimulus that they provided during the pandemic so that they can control inflation and market is not distorted. पहला रिकमेंडेशन ये. दूसरा इज ऑल्सो वेरी जेनरिक दैट यू कैन यूज इन एनी आंसर रिलेटेड टू इकोनॉमी. अगर मतलब हमें डिस्कस करना है कि कैसे डेवलप कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी को. सो दैट एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी इम्प्रूव्ड, लॉजिस्टिक्स शुड बी इम्प्रूव्ड सो दैट ट्रेड कुड बी डन इन अ मोर स्मूदर मैनर. लाइक टर्न अराउंड टाइम जो शिप्स का होता है उसे हम डिक्रीज कर सकें. ऑलराइट. एंड लिबरलाइजेशन यानी कि टैरिफ्स को हम रिड्यूस करें ताकि और बेटर ट्रेड हो सके. बट अगर हम टैरिफ रिड्यूस करेंगे तो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट आवर इकोनॉमी बिकॉज कॉम्पिटिटिवनेस मतलब कंपटीशन बाहर से आ जाएगा. एंड सेकंड पॉइंट इज दैट इट विल आल्सो रिड्यूस आवर टैक्स बेस. सो ये उनके पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पर्सपेक्टिव से है. ऑलराइट. जैसे कि आप सोच सकते हैं कि 1990s में जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, जो आईएमएफ ने डिफरेंट रिकमेंडेशन दी थी, लाइक कंट्रोलिंग फिस्कल डेफिसिट, कंट्रोलिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिड्यूसिंग द टैरिफ रेट्स ऑन इंपोर्ट्स. सो ये चीज उनके पर्सपेक्टिव से है. सो चूज वाइजली व्हाट यू वांट टू मेंशन इन योर मेंस आंसर. डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी अगेंस्ट द डॉलर शुड बी कंट्रोल्ड. ऑलराइट. एक ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं. इट इज वेरी जेनरिक. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ताकि इंडिया और ज्यादा इफेक्टिवली पार्ट बन पाए किसका? ग्लोबल वैल्यू चेन्स का. एंड कंट्रोलिंग इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट. मोस्ट ऑफ अस नो व्हाट करंट अकाउंट डेफिसिट इज, और इवन इफ वी डोंट नो वी कैन go back to our basic books and learn what current account deficit is. Again, import tariff का rationalization and country's net international investment position उसे भी improve करते हैं. All right. So these are some recommendation because we are running out of time. So we are just skimming through this. All right. Now it is important from the prelims point of view. External Sector Report 2022, it was published by IMF. What all other reports are published by the International Monetary Fund? So we can see them here. World Economic Outlook, Global Financial Stability Report, Fiscal Monitor and Global Policy Agenda. These are the reports which are published by IMF because ऐसे questions prelims में time to time आते रहते हैं कि कौन सी report कब publish हुई और किसने करी. Now हमने ये देख लिया. लास्ट में बचता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो कि बहुत ही बेसिक है. फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स फर्स्ट क्या, अगर कोई भी इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं तो पहले हम देखते हैं कि ये रिलीज कौन करता है. हु रिलीज दिस इंडेक्स? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स. ऑलराइट. अभी रिसेंटली रिलीज किया है, इन विच द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स स्टैंड्स एट 56.4 एज कंपेयर्ड टू 53.9 द प्रीवियस ईयर. So financial inclusion index की वैल्यू इंक्रीज हुई है. It means that financial inclusion has increased in our economy. Financial inclusion जैसे ही आप वर्ड सुनो आपका दिमाग जाना चाहिए GS3 सिलेबस में जहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन मेंशन्ड है. ओके. इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन उसका एक पार्ट आ जाता है. ऑलराइट. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन 56.4 हो गया. इट मींस दैट द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग. This index is published annually in the month of July and it was announced in April 2021. All right. One thing to note about this index is that there is no base year of this index and the
financial inclusion is just based on 4 parameters, okay, spread across various indicators, but the parameters are, 3 parameters are there: access, usage and quality. First is access, usage and then there is quality. एंड उसके बाद डिफरेंट इंडिकेटर्स आ जाते हैं जिसके बेसिस पे ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स फॉर्म किया जाता है. ऑलराइट, सो विद दिस वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ दिस सेशन एंड I want to announce that there is a course going on, Himachal Pradesh Prelims Crash Course, that you can check on our website and you may join it because Himachal Pradesh का prelims का paper आने वाला है. Alright, so with this I want to thank you all for listening. I hope you had a great learning experience. Thank you so much.